पाठ परिचय प्रस्तुत एकांकी सुखी डाली में एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था तथा जिसकी यह मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वट वृक्ष की हरी भरी डाली के समान है। इसमें व्यक्ति, परिवार और समाज में व्यापक रूप से व्याप्त आधुनिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित किया गया है। दादाजी के संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से जो हलचल मच जाती है वो सभी की चर्चा का विषय है, किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य जब उसके प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देते हैं तो बेला को अपना दम घुटता सा प्रतीत होता है और अंत में वो इंदु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार दादाजी की परिपक्व बुद्धि द्वारा एक असहयोगिनी कितनी जल्दी गृह कार्य में सहयोग देने लगती है। श्री गंगा प्रसाद पांडेय का कथन कितना सार्थक है कि दादा रूपी वट वृक्ष की छाया में परिवार के भीतर चलने वाले संघर्ष की चरम अभिव्यक्ति बेला, छोटी बहू के इन शब्दों से स्पष्ट होती है। दादाजी पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? संक्रांति काल की अस्त व्यस्तता में व्यक्ति वैचित्र्य की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करने में यह नाटक पूर्ण सफल है। पात्र परिचय। पुरुष पात्र। स्त्री पात्र दादा, बेला, छोटी बहू, करमचंद, छोटी भाभी, बेला की सास, इंदु की माँ, परेश, मझली भाभी भाशी, बड़ी भाभी मल्लू, मझी बहू, बड़ी बहू, रजवा, पारो। पहला दृश्य। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही हैं। वर्षों में इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट ही की भांति महान दिखाई देते हैं। आयु की 72 सर्दियां देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुखबा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और रसूख से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है, गांव में उनका और भी आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। उनकी तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी साधी महिलाएं हैं। उन सब में उनकी पोती इंदु से ही, जिसने प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं, किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पतोहू के आने से, जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहरें सी उठने लगी हैं जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में ये बरामदा घर की स्त्रियों का रानदेव रेंडेक्सवस सम्मिलन स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां यहाँ धूप लेती हैं, कभी चरखे काटती हैं, कभी गप्पे उड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं और कुछ न हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। ये स्नानागार बाहर के अहाते में है, दाईं दीवार के कोनों में जो दरवाजा है उसके साथ ही बाहर को
रसोई आदि से निबटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज वहां कपड़े धोया करती हैं और निरंतर धप धप की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाने कोने में छोटी सी गैलरी है, जिसमें दोनों ओर आमने सामने पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़कियां बरामदे में खुलती हैं। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी भाभी, जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, का कमरा दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियां बनी हैं, जो ऊपर को जाती हैं। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। 2 एक चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी हैं। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भरीकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी। क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु, चुप। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? इंदु, क्रोध से और क्यों ईंट मारती? बड़ी बहू, कुछ कहो भी। इंदु, मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटका कर अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। बड़ी बहू, आश्चर्य से क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू, उसी आश्चर्य से काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? इंदु, दोष ये था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू, स्तंभित काम करना नहीं आता। इंदु, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख आऊंगी। भला कई दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते, किंतु बहू रानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूंगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी? बड़ी बहू, सलीका नहीं। इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है। घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। बड़ी बहू, हाँ और क्या? इंदु, झट से बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा, तुम तो लड़ते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर जो यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फुहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। बड़ी बहू, कहीं उसने ये सब बातें? इंदु, और कैसे कही जाती है, जब से आई है यही तो सुन रहे हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। नाक भान चढ़ाकर यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना उड़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। बड़ी बहू, चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की? एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी और ले आती तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी, इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती हैं। उनके पीछे पीछे रजवा है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। इंदु, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी। छोटी भाभी, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो?
छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे हुए गले से, माँ जी, आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम न करने जाऊंगी। छोटी भाभी, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह बिचका कर, जी हाँ, बच्ची है। रोटी को चोची कहती है। उसे तो बात ही करनी नहीं आती, क्रोध से अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं और गज भर की जबान। बड़ी बहू, बात यह है छोटी माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी बात से घृणा है। छोटी भाभी, चिंता से फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सुखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। मंझली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मंझली बहू, किही किही, हा हा हा। इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो? मंझली बहू, खीही खीही, हाथ पर हाथ मारती है। हा 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 हा। गैलरी से मंझली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती हैं। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है? इंदु, ये भाभी हैं कि बस हंसे जा रही हैं, कुछ बताती ही नहीं। मंझली बहू, मैं कहती हूँ। फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मंझली बहू, आज भाई परेश की वह गत बनी कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। खी ही, हा 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 हा। छोटी भाभी, ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मंझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई। बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू और इंदु, बात क्या हुई? मझली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी। बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गलेसड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हंसती है। और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर मंझली भाभी, छोटी बहू। छोटी भाभी, यह तो। मंझली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गलेसड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे, तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। हाथ मटका कर, न भाई। मंझली और बड़ी भाभी, हाँ, ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मंझली भाभी, तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गलेसड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडॉल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। मेरे मायके में। इंदु, क्रोध से, बस, उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। मंझली बहू और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। हंसती है। और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। खिही खिही। हंसती है। दूसरी भी उसके साथ हंसती है। मंझली बहू, मैं तो चुपके से चली आई, मुंह बिचका कर। जबान है छोटी बहू की या कतरनी। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जबान ही जबान है।
बात तो जब है जब काम भी हो। एक काम को कहो तो 100 नाक भौ चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसलखाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी गुसलखाने में गल रहे हैं। तू उठा क्यों न लाई उन्हें, जा भागकर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से परेश ने समझाया, नहीं उसे। इंदु, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है। मझली बहू, वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है न भी तक पड़े हुए हैं। कहका कर हार गए परेश महाशय। बहुरानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। हंसती है इंदु, और बड़ी बहू भी हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन बस। क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी। इंदु, क्यों? उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादा के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। छोटी भाभी, तुम चलो इंदुकपड़े फटक कर अहाते में डाल दो, शायद उन्हें जरूरत हो। मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, वही बरामदा, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ, दीवार के पास तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते दादा बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद की भरीकुटी तंग गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। फिर करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है। जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हंसते हैं। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। हंसते हैं, नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर करमचंद से, मैं कहा करता हूँ ना बेटा, कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई, उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी, और हमारा ये परिवार बरगद के इस महान पेड़ ही की भांति है। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा, चिंता से क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है। करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है। करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी, यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और वही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहां तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्द की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सब ने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है, और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। दूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता, जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता, जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले, और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। भाषी, बाहर से, दादाजी,
मल्लू और जगदीश ने मेरा वटपेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा, पेड़ हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं। ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा। जाना करमचंद, जरा हटाना दोनों को। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे न, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हों तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। परेश, मैं लज्जित। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास। मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ, इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा, हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अब्रे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। जभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वो स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। परेश, जी दादा, हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। परेश, जी मैं इसलिए आया था। दादा, हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? परेश, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कई दिन हुए हैं उसे आए। और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। परेश, वो मन लगाती ही नहीं। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वो एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल से वह उब जाती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। परेश, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और इधर वो उन सब से दुखी है। कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। दादा, हाँ हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वह आजादी चाहती है। दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। दादा, वे समझती हैं कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। परेश, और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहां उसे कोई रोकने वाला न हो, जहां वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें। उसकी सारी उद्विग्नता, अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? दादा कुछ क्षण चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर खांसते हैं। यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए, वह पड़ा भी बेकार है। और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता, पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, खासकर शाखाओं, पत्तों, फलों फूलों से भरा पूरा। हुक्के के एक दो कश लगाते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती हैं और वह केवल ढूंढ रह जाता है, स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रहे हैं। और मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा, तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित,
सुसंस्कृत बहू आई है तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। परेश, जैसा आप उचित समझें। दादा, और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है। दादा, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। परेश, जैसी आपकी इच्छा। चला जाता है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। दादा, जैसे अचानक उन्हें कुछ सूझ गया हो। रजवा, रजवा। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती, फिर आवाज देते हैं। रजवा, रजवा, रजवा। दूर से जी आई भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाएं। रजवा, जी, मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्त और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मुड़े और चटाइयां लाकर बिछा देती है। दादा, हुक्का पीना छोड़कर इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर, जो इस बीच निरंतर आता रहा है, सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से जी आई। अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। दादा, एक कश खींचकर बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। इंदु, दादाजी। दादा, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वो एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे ये बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता। फिर कुछ क्षण हुक्का हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर, बेटा, ये कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों ही से पेड़ है और डालियां छोटी हो या बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या फिर उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। दादा, इंदु बेटा और मंझली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। मंझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा, जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं, जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाएं। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश करता हूँ। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, अब तुम जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। गला भर जाता है।
यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़ें, फलें फूलें, जीवन की सुखद शीतल वायु के परस से झूमें और सरसाएं। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाएं। बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की। भाशी, दरवाजे से झांककर हम सुन चुके हैं। हम नहीं आते हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा, तारा राजा की सुनाओ तो आए। हर बार वही कहानी नकल उतार कर। एक था बरगद का पेड़। हंसते हुए अदृश्य हो जाते हैं। दादा हंसते हैं, यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और चारपाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। लगता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप ले रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। बेला, अपने आप से मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी समझ नहीं पाती। आज कुछ है, कल कुछ। पल में तोला, पल में माशा। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास, छोटी भाभी आती हैं। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। ये सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगुड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। बेला, आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा न माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी न किया हो, वह उससे किस प्रकार हो सकता है? बेला, उठती हुई आप बैठिए तो। छोटी भाभी, उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बैठो बेटी, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बहारना सिखा देना। फिर वो गलती नहीं करेगी, न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं आप। छोटी भाभी, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यूं तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो, चलने को उद्यत होती है। बेला, आप बैठिए तो सही। छोटी भाभी, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ लो, मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। चली जाती है। बेला, पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई, जैसे अपने आप इन लोगों की कुछ भी तो समझ में नहीं आती। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गईं। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थीं। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंझली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। मंझली भाभी, क्यों बेटी,
अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था। हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब। बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मंझली भाभी, वैसे ही खड़े खड़े मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। बेला, अन्यमनस्क सीख नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं। रजवा काम सीख जाएगी, कुछ चिढ़कर, पर आप खड़ी क्यों हैं? मंझली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज न करेगी। बेला, और भी चिढ़कर मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला, रुआसी आवाज में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं? उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए। मंझली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मंझली भाभी, जैसे अपने आप से परायों का सा। बाहर से मंझली बहू के कहकहे की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह इंदु और पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मंझली बहू, हंसी रोककर, और क्यों, मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा। हंसती है। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना, क्या किया मालवी ने? सच? मंझली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है। उसकी एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंझली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंझली भाभी, कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। मंझली बहू, मैं कहती हूँ। मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटा मुटा। सब ठहाका लगाती हैं। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली ये तो बताओ। मंझली बहू, रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए थे और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निबट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मालवी मारोमार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या, बस ताका किए मुटा मुटा। मंझली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। मंझली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का। मंझली बहू, गली के सिरे पर खड़ा खम ठोंक रहा है। जंघा पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे खम ठोंक रहा है। इंदु, खम ठोंक रहा है। मंझली बहू, कहकहा लगाती है, सच, खम ठोंक रहा है और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं जोड़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और इधर मालवी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पांव घर के भीतर। सब हंसती हैं। इंदु, अंगुली ओठों पर रखकर शश श श, भाभी आ रही हैं। हंसी एकदम बंद हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बेला, क्यों जीजी, आप चुप हो गईं? जरा हंसकर किसी बात पर कहकहे लगाए जा रहे हैं। मंझली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंझली बहू, जल्दी से उठकर, आए आए, आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती हैं। आए आए, आप इधर बैठिए। फिर नीखता छा जाती है, जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला, मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, मैं तो उधर ही जा रही थी।
यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन स्वर में हंसी के साथ। आप हंसिए, ठहाके मारिए। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। मंझली बहू, मैं कहती थी न कि इस ओर न आओ। मेरी मुई आदत हुई हंसने की। इंदु, अब एक यही जगह थी बैठने को। मंझली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ, दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे। इंदु, किंतु एक जगह थी पर्दे वाली। मंझली बहू, तुम भूल गईं, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कहकहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ, चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं। मैं चली जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंझली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना न बैठा करो बड़ी बहू से। हम तो बहू गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा लें। छोटी बहन तो कब की गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा दिन और महरियां चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मंझली की बातों में। चलो चलो, दोनों चली जाती हैं। मंझली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, वहां चल कर बैठें। पारो, चलते हुए, मुझे तो जाना है भाभी। लल्ला आ गया होगा, न मिली तो चिल्लाएगा। मंझली बहू, अपने आप से ये छोटी बहू तो उकाब सी आकर सबको डरा गई। पारो चली जाती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है। मंझली बहू भागकर उसके पास जाती है। बड़ी भाभी, सुनी तुमने मालवी की बात? खोद डाली उसने सारी की सारी छत। कहकहा लगाती है। बड़ी भाभी, मालवी ने छत खोद डाली। मंझली बहू, उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई। हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बना कर गए थे कि आ गई मालवी मारो मार करती। बड़ी भाभी, पर मंझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर से परेश और बेला बातें करते प्रवेश करते हैं। बेला, आर्द्रकंठ से आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, आखिर बात क्या है? कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं। बड़ी भाभी, मंझली भाभी और माँ जी तक मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसा डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से अभी अभी सब हंस रही थीं, ठहाके पर ठहाके मार रही थीं। मैं गई तो सब ऐसे सन रह गई, जैसे भरी सभा में किसी ने चुपकी सीटी बजा दी हो। परेश, पर इसमें बेला और कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं, मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी, कोई तुम्हारा आदर नहीं करता। अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी, तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी, तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम न जाने तुम और क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है। बेला, निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है, न जाने मैं क्या चाहती हूँ। सिसकने लगती है, न जाने मैं क्या चाहती हूँ। पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये सब आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपा कर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला, उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु, बेला के कंधों को हिलाकर भाभी जी। भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, हैं? भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला, आंखें पोंछ कर, नहीं, मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। इंदु, लो भला ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तू मुझे यूं जी जी करके नहीं बुलाती थी। इंदु,
मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था? इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने ये सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे ये कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। बेला, ओह, ये बात है। इंदु, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, ये कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला, दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए, कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी पटक लाऊं। बेला, चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज न होंगे? बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर, मेरी प्यारी इंदु। इंदु, प्यार से भरे हुए गले के साथ भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं। धूप निकली जा रही है। इंदु, पर आपके कपड़े। दोनों चली जाती हैं, कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, मेले में चलेंगे। जो तू कहेगा, वही खिलौना ले देंगे। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा, आश्चर्य से हैं। छोटी बहू। इंदु, बाहर से, मैंने तो बहुतेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू, इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास जा खड़ी होती है। दादा, बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई है, मैंने बहुतेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, जिन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा, इंदु तुझे इतनी बार कहा है कि आदर से। बेला, भावावेश के कारण रुधे हुए कंठ से, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? सिसक उठती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। पर्दा सहसा गिर पड़ता है। Text introduction. The present one-act play, Sukhi Daali, depicts a joint family living peacefully and believing that the joint family is like the lush, green branch of a large banyan tree. It meticulously depicts the modern conflicts and psychological conditions prevalent within individuals, families, and society. The turmoil caused by the arrival of the younger daughter-in-law, Bela, in grandfather's joint family becomes a topic of discussion. However, when, after grandfather's persuasion, all the family members begin to treat her differently, Bela feels suffocated and ultimately surrenders to Indu. Thus, through grandfather's mature wisdom, an uncooperative woman quickly begins to cooperate with household chores. How meaningful is the statement of Sri Ganga Prasad Pandey that the extreme expression of the conflict going on within the family under the shadow of the banyan tree in the form of grandfather is clear from these words of Bela, younger daughter-in-law. Grandfather does not like any branch to break away from the tree, but would you like that branch to dry up and wither while still attached to the tree? This play is completely successful in presenting a realistic glimpse of individual uniqueness in the chaos of the Sankranti period. Character introduction. Male characters. Grandfather, Karmchand, Paresh, Bhashi, Mallu. Female characters. Bela, younger daughter-in-law. Younger sister-in-law, Bela's mother-in-law, Indu's mother. Middle sister-in-law.
elder sister-in-law, middle daughter-in-law, elder daughter-in-law. Rajwa. Paru. First seen, in this age of human progress, when individual freedom is valued to the point of anarchy and dictatorship is considered highly reprehensible in civilized society, Mulraj unites his entire family, establishing complete dominance over it, standing firm like the great banyan tree whose long branches cover the earth in his courtyard like a huge umbrella, concealing countless nests within its leaves, braving storms and hurricanes for years. Having lived in the company of this banyan tree for years, grandfather appears as majestic as the banyan itself. Even after 72 winters of age, his body remains slender, and his white beard, like the long beard of the banyan tree, touches his navel, as if vowing to touch the earth. Grandfather's eldest son fought for the government in the Great War of 1914. In return, the government granted grandfather a mukhba, square foot of land. But grandfather was not satisfied with this mere favor. With his courage, hard work, dedication, foresight, and influence, he made a fortune. His two sons and grandson managed the land, farm, dairy, and the sugar factory he recently established on his land. His youngest grandson recently became a deputy tehsildar in this town and recently married a well-educated girl from a respectable and wealthy family in Lahore. His younger grandson, Paresh, becoming a deputy tehsildar, and his younger daughter-in-law becoming well-educated are two significant developments in themselves. The former is likely to further enhance his reputation in government circles and earn him even more respect in the village. However, the latter poses a crisis for his family. His three daughters-in-law, known at home as the elder sister-in-law, middle sister-in-law, and younger sister-in-law, are simple women. Of them, his granddaughter, Indu, who has successfully completed her primary school education, is considered the most educated. She has a good say in the household, and his grandfather loves her dearly. However, the arrival of this graduate younger daughter-in-law, known at home as the younger daughter-in-law, has created ripples in the family pond, like the dropping of a large brick into still water. The curtain opens onto the veranda of the building. In reality, this veranda is a rendezvous for the women of the house. It's bustling all day long. Sometimes they sunbathe here, sometimes they spin the spinning wheel, sometimes they gossip, sometimes they quarrel, and if nothing else, they wash the clothes lying in the bathroom. This bathroom is in the outer courtyard, next to the door in the corner of the right wall that leads outside. After finishing cooking chores, 2 or 4 women of the house wash clothes there almost every day, and the constant sound of thump-thump echoes through this veranda. In the left corner of the front wall is a small gallery, in which, facing each side, are the rooms of the middle daughter-in-law and the eldest daughter-in-law, whose windows open onto the veranda, followed by those of the middle sister-in-law and the eldest sister-in-law. The younger sister-in-law's room, who is Indu's mother and younger daughter-in-law Bela's mother-in-law, is on the right. The younger daughter-in-law's room is on the upper terrace, and the left wall has stairs leading up. 2 cots are laid out on the opposite wall, facing the gallery. A couple of cots are also placed against the wall. A large, old-fashioned armchair is also placed against the opposite wall. It's still early afternoon, so the veranda is relatively quiet, only the sound of women chattering hurriedly can be heard from the gallery. A few moments after the curtain is raised, Indu hurries out of the gallery and, looking agitated, sits on the cot on the right. The elder daughter-in-law follows her, walking calmly. Indu is frowning, while the elder daughter-in-law is calm and serious. Elder daughter-in-law, putting her hands on Indu's shoulders, say something. What did the younger daughter-in-law say? Indu, quiet, elder. Daughter-in-law,
what did she say that made you so angry? Indu, angrily, and why would she throw a brick? Elder daughter-in-law, say something, Indu, this happens in my parents' house, this doesn't happen in my parents' house. Waving her hands, she doesn't consider anyone else anything compared to herself and her parents. We are fools, illiterates, and uncivilized to her. Elder daughter-in-law, surprised, what? Indu Mishrani was standing outside the living room, crying. When I asked, I found out that Bahurani had fired her. Elder daughter-in-law, with the same surprise, she fired her. What was her fault? Indu, the fault was that she didn't know how to work. Elder daughter-in-law, stunned, don't you know how to work? Indu, that poor woman even said she'd learn everything in 10 or 5 days. How long has it been since I've been doing your work? But the daughter-in-law didn't listen. She snatched the broom from her hand and said, go away, I'll do everything myself. I don't even know how to clean the living room yet. How can you learn it in 5 or 10 days? Elder daughter-in-law, no manners, Indu. I went and explained that Bhabhi, this Mishrani, has been doing the housework for 10 years. She cleans the entire house, washes the dishes, and washes the clothes. I wonder what work you have that she can't do. Then I explained that Bhabhi, you should have manners even when you get work done from a servant. Elder daughter-in-law, yes, and what? Indu, quickly, she said, only you people have manners. I said, you fight. I just wanted to say that there's a way to get work done from a servant. She said angrily, and I don't know that way, I've seen servants who have come here. Then she continued, the way to get work done is known only to someone who understands work. Just sweeping a room morning and evening doesn't clean it. Its design and decoration are also important. I wonder how you people manage with these untidy servants. Such a rustic Mishrani wouldn't stay at my parents' house for even 2 days, let alone 2. Elder daughter-in-law, did she hear all these things? Indu, and how are they saying this? Ever since I came here, I've been hearing this. If the servants are good at her parents' house, if the food and drink are good at her parents' house, if the clothes are good at her parents' house, then it's her parents' house. I wonder how we're even living. Frowning, people here don't know how to eat, drink, or dress. Our servants are illiterates, our neighbors are illiterates, we ourselves are illiterates. Elder daughter-in-law just listens, astonished. Indu, I also said, what's the matter with your parents' house, Bhabhi? You're a model. If you'd brought another Mishrani, even we illiterates would have learned something from her. From the room on the right wall, the younger sister-in-law, Indu's mother, and younger daughter-in-law Bela's mother-in-law enter. Rajwa is following them. Younger sister-in-law, why, Indu, what's the matter? Rajwa is crying. Did the younger daughter-in-law say something harsh to her? Indu, when do they say something sweet that they'll say something bitter today? Younger sister-in-law, what kind of harsh words are you saying today? Have you had a fight with the younger daughter-in-law? Rajwa, with a choked voice, Mother, today she forcibly removed me from work. It's been so many years since I've been serving you, and no one has ever disrespected me like this. Mother, please keep me with you. From today on, I won't do her work. Younger sister-in-law, she's a child, Mishrani. You've become a child with her. Indu, with a frown, yes, she is a child. She calls Roti Chochi a sweetheart. She doesn't even know how to talk. Angrily, she doesn't understand anyone in front of her parents, and she has a long tongue. Elder daughter-in-law,
the thing is, younger mother, the younger daughter-in-law doesn't like anything we eat, drink, or wear. She hates us, our neighborhood, and anything we say. Younger sister-in-law, worried, then how will it work? In our house, we live together, respect our elders, consider the dry food of our own home better than the dry food of others, be kind to servants and the younger ones. The middle daughter-in-law enters from outside, laughing. Middle daughter-in-law, kihi. Kihi. Ha ha ha, Indu, what's the matter, sister-in-law, that you are rolling with laughter? Middle daughter-in-law, hihi. Hihi. Clapping her hands. Ha 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 ha, the middle sister-in-law and the elder sister-in-law enter from the gallery. Both, what's the matter today that there's so much laughing and laughing? Indu, this sister-in-law is just laughing and not saying anything. Middle daughter-in-law, I'm saying. She laughs again. Elder daughter-in-law, at least say something. Middle daughter-in-law, today, brother Paresh was in such a state that the poor guy was left speechless, giggling, ha 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 ha. Younger sister-in-law, oh, your laughter, daughter-in-law, middle daughter-in-law, what can I do? I'll die of laughter, little mother. The younger daughter-in-law just made Paresh look like that. The poor guy ran to his grandfather with his mouth open. Elder daughter-in-law and Indu, what happened? Middle daughter-in-law, I went upstairs to put things away. I didn't hear a lot of things, and I couldn't understand a lot of them. They were chattering in English. The younger daughter-in-law was a little angry. It turned out that when Paresh went into the room after taking a bath, the daughter-in-law had taken out all the furniture and put it outside. Paresh asked why. The younger daughter-in-law said, I won't let these broken chairs and rotten furniture stay in my room. Paresh started saying, our elders. The younger daughter-in-law interrupted him and said, our elders used to roam naked in the forests, so should we also imitate them? Laughs, and whatever stuff was lying there was also picked up and thrown out. Indu FIR. FIR Manjali Bhabhi, little daughter-in-law, Choti Bhabhi, this is middle daughter-in-law, Paresh said, our grandfather used to sit on this furniture, our father used to sit on it, our uncle used to sit on it. They were never ashamed, they never complained about the furniture being rotten. Now, if I go and object to keeping it, my grandfather will say, the boy has gone crazy since he became the Tehsildar. Waving his hands, right, brother, Manjali and elder sister-in-law, yes, that's what Paresh said. Choti Bhabhi, Paresh, my son is a disaster, Manjali Bhabhi, then the daughter-in-law said, don't say that, I just like to sit and take in this slushy stuff near my waist, like a thumping duksha. In my motherland. Indu, angry, well, she has to go to her parents' house for 24 hours. Manjali Bahu, our Choti Bahu's language is like a real squirrel from her parents' house in the middle of a big sexual intercourse, laughs, our sir did not even give a damn about Paresh. The poor wet cat went to Dadaji, chi-hi. Laughs. The others are also laughing with him. Manjali Bahu, I came quietly, making a face, is the tongue of a short Bahu or a sliver, and then there is the force of words when nothing comes to mind. Poor Paresh is talking like his own mouth. How did you go about becoming a Tehsildar? Indu, it's just a tongue. It's a job, when there's work too. If you ask him to do one thing, he starts fussing. Dadaji had asked for 4 clothes to be washed. They are lying in the bathroom, defecating. Choti Bhabhi, you are in the kitchen. Why didn't you pick them up? Go and pick them up and beat them and put them in the courtyard. I will explain to daughter-in-law how it will go like this, Indu, Paresh's like there is a big hearing. Manjali Bahu,
do you remember the talk about muslin tank and baron? It is still there. Paresh Mahashay Bahurani did not even touch her hand, and she took him to Dadaji out of shame. There will be Tehsildar in the court. In the house the criminals will be gone and gone. Laughs. Indu and the elder daughter-in-law are also laughing. Choti Bhabhi, on Dadaji's clothes, big sister-in-law, tum bhi behan bas, kya after reading and writing so much, little daughter-in-law will wash clothes. Indu, why? His hands are of salt soil that will melt. The sound of Dada's hookah gurgling from outside comes. Choti Bhabhi, maybe they need it. I will ask. I will explain to my daughter-in-law. Curtain falls. Second scene. The same Varda vertical bar spread on the throne of the right ear. There is a pillow near the wall. Dada is sitting comfortably on the pillow and drinking hookah. His middle boy is sitting near Karamchand pressing his feet. Hookah pite grandpa is watching the children playing outside in the yard. There is a sound of the faucet running quickly from the bathroom. Maybe a child is driving it. Because the dust of Karamchand has gone away. A few moments after the curtain rises, there is the sound of the tap running and the hookah gurgling. Then, Karamchand with his shoulder, have a snack, Jagdish. What's wrong with you? Just let it rest. Are you just sitting and eating? Dada, removing the hookah and looking there, no, let the children play, again gurgling the hookah. The children, laughing, brought the whole bark of the bark and put it in the yard and watered it. Laughing, do not know that hookah is gurgling, again gurgling to Karamchand. I say, son, that once a branch is broken from a tree, give it lakhs of water, it will not be clean, and this family of ours is like this great tree of banyan tree, Karamchand, but perhaps now a branch will break and separate from this tree. Dada, worried, what's wrong? Who is different? Karamchand, maybe Chota will be separated. Dada, Paresh. But what's wrong with him? Karamchand, it's not him who's suffering, it's Choti's daughter-in-law. Dada, I didn't tell anyone. If there was any complaint then it should have been deleted there. Even a slight scratch, if immediate medicine is not applied to it, it will become a bigger wound and the wound will become infected, then applying lac ointment will not cure it. Karamchand, I don't know very well, but even though my daughter-in-law's mind is full of desire, it's a little more than necessary. Did I put that muslin instead of the quilt? Our Saab accepted it, but the braid did not fit the daughter-in-law. Perhaps she thinks her mother's house is bigger than this house, and looks at this house with hatred. Bhashi, from outside, grandfather, Mallu and Jagdish uprooted my banyan tree, screaming while fighting with Mallu, why did you uproot my tree? Why did you uproot it? Grandfather, the tree. Laughs. Children. Laughs. Wait, Bhashi, don't fight, son. Karamchand, please remove them both. Karamchand leaves. Grandfather again puts the hookah pipe to his mouth. Paresh enters with his eyes downcast. Grandfather, come, son, Paresh, I sent a couple of clothes, please see if your daughter-in-law has washed them. If they have, please bring them. Then I will talk to you. Paresh, I am ashamed. Grandfather, if they are not washed, will they be washed, son? Come, sit here with me. I was just about to call you. Come and sit here. Then he starts smoking the hookah. Paresh quietly comes and sits next to his grandfather. Grandfather, stopping smoking his hookah. I just learned from Karamchand that your daughter-in-law didn't like the duvet covers and the muslin. Your uncle is an old-fashioned man. How would he know how to buy new fashion items?
That's why I'm telling you to take your younger daughter-in-law to the market. She'll buy the things she likes herself. Paresh, yes, grandfather, taking a puff from his hookah. And I thought that now that the daughter-in-law is here, she'll help prepare Indu's dowry. Paresh, yes, that's why I came, grandfather. Yes, tell me, why are you hesitating? Paresh, the thing is, Bela doesn't like being in this house. Grandfather, how can she get used to it so quickly, son? How long has it been since she came? And then, son, she doesn't get used to it, she's made to get used to it. Paresh, she just doesn't seem to be interested. Grandfather, then we should try to keep her happy. She comes from a big family. She's her father's only daughter. She's never lived with relatives. She must be scared of this crowd. She must be bored with all the noise. We'll all work together to make her happy in this house. Paresh, no one likes her. Everyone criticizes her. Just now, my mother, my elder aunt, my middle aunt, my elder sister-in-law, my middle sister-in-law, Indu, and Rajwa all came to me. They all complained about her, taunting her, saying, "You've sold yourself to her, you don't explain anything to her." And here she is, unhappy with them all. She says, "Everyone insults me, everyone makes fun of me. They waste my time. I feel like I've come among strangers. I don't see a single one of mine." If you believe me, grandfather, yes, tell me, Paresh, the thing is, she wants independence. She doesn't like interference from others, criticism from others. Grandfather just smokes the hookah. Grandfather, she thinks that because she's the younger daughter-in-law, everyone considers it their duty to criticize her and order her around. Grandfather just smokes the hookah. Paresh, and she wants to set up her own household, where no one can stop her, where she can live her life freely. She wants that if she gets the house with the garden, she can live in happiness and peace. I won't stay here forever, it's just a matter of a few days. I'll be transferred. If you can arrange for the house with the garden for that time. This desire is the driving force behind all her anxiety, distraction, and irritation. How do I explain it to him now? Grandfather smokes hookah silently for a few moments, then, yes. Coughs, the easiest way to get rid of this hassle is to give you the house with the garden, it's lying around useless. And right now, I don't intend to use it for anything, but you know, son, that's impossible while I'm alive. Smokes hookah again. When I think of my family, a great banyan tree appears before me, coughs, full of branches, leaves, fruits and flowers, takes a couple of puffs from the hookah. And then, before my eyes, the branches of this great tree begin to break, leaving only a stump, voice low, as if speaking to himself, and I shudder. No, son. I won't let this happen as long as I'm alive. Don't worry. I'll explain it to everyone. No one in the house will dare disrespect your wife. No one will waste her time. By God's grace, we have a well-educated and cultured daughter-in-law, so will we disturb her with our foolishness. You go, son, don't harbor any worries. I'll find a way. Rest assured, she won't feel surrounded by strangers. She'll receive the same respect and hospitality she received at home. Paresh, whatever you deem appropriate. Grandfather, and you yourself must ensure that nothing you say hurts her. Don't say anything she considers an insult. Paresh is about to leave. Grandfather, and you take her with you and buy everything from the city. Don't worry about the rest, I'll find a way. Paresh, as you wish.
He leaves. Grandfather begins smoking the hookah again. The long puffs are a testimony to the fact that grandfather is thinking while smoking. Grandfather, as if suddenly having an idea, Rajwa. Rajwa. He puffs on the hookah again, Rajwa doesn't come, then calls out again. Rajwa. Rajwa. Rajwa, from a distance, she's here. She enters as if running. Grandfather, send everyone here except the younger daughter-in-law. Tell them to leave everything and come to me. Rajwa starts to leave, and listen, no one should be left alone. Tell everyone to come here for a few moments. Rajwa, yes, I'll go and tell everyone right now. She leaves. Grandfather begins smoking the hookah again. The sound of someone washing clothes comes from the tap. Grandfather takes even longer puffs. Gradually, the family members begin to arrive. The children and young men sit on cots and charpoys, and the women on the veranda floor. Rajwa brings out mats and rugs and spreads them out for them to sit on. Grandfather, stopping smoking the hookah, where is Indu? Can't you see her? He then starts smoking the hookah and glances around. Rajwa goes to the bathroom door and calls out to Indu. The sound of laundry, which had been continuously coming in the meantime, suddenly stops. Indu, from outside, I'm coming inside, I was at the tap, washing clothes. Grandfather, taking a puff, sit down, son, smoking the hookah for a moment or two. I've called you all here today with a special purpose. I'm very sad to hear that the younger daughter-in-law isn't enjoying herself here. Indu, grandfather. Grandfather, Indu, let me tell you what I mean. I'm very sad to hear that the younger daughter-in-law isn't enjoying herself here. It's not her fault, it's ours. She's the daughter of a big family, highly educated. She's respected by everyone and has always ruled. Here, she's just the younger daughter-in-law. She has to respect everyone, she has to be subdued, she has to obey everyone's orders. Her personality has been suppressed here. I don't like this. He puffs on the hookah for a few moments, then, son, one doesn't truly become great by age or status. Greatness is determined by intelligence, by ability. The younger daughter-in-law may not be older, but she is certainly the greatest of us all in wisdom. We must benefit from her intelligence and her abilities. I wish she receives the same respect and honor here that she received in her own home. Everyone should obey her, consult her, and I would be pleased if you all shared her work and gave her more opportunities to study. She shouldn't even feel like she's in a different home, a different environment. He puffs on the hookah for a few moments, then. Son, this family is a great tree. We are all its branches. A tree is made up of its branches, and whether small or large, they all enhance its shadow. I don't want any branch to break away from it. You have always obeyed me. This is what I want to say. If I hear anyone disrespecting the younger daughter-in-law, making fun of her, or wasting her time, my ties with this house will be broken forever. Now, you all can leave. He smokes the hookah again. Everyone slowly begins to leave. Grandfather, Indu, daughter, and middle daughter-in-law, please sit down. Everyone except the two leaves. Middle daughter-in-law, limit your laughter to those who can tolerate it, son. You can laugh at outsiders at home, but it's not right to ridicule your own family members until they become a part of the family. Indu, your younger sister-in-law is very intelligent, well-educated, and cultured. Instead of mocking her or fighting with her,
you should respect her and learn from her. I order both of you to be especially careful in this matter. He starts smoking the hookah again, then a moment later. Now you go and see that I don't have a chance to complain again. His throat chokes. My only wish is that all the branches grow together, flourish, sway and rustle with the pleasant cool breeze of life. The mere thought of a branch separating from the tree makes me shiver. He starts smoking the hookah again. Indu, forgive me, grandfather. You'll never have a chance to complain about me. They both leave. Grandfather smokes his hookah for a while, then calls out to the children playing outside. Bhashi, Mallu, Jagdish, come, let me tell you a story today about the banyan tree and its children. Bhashi, peeking through the door, we've already heard it. We don't come. We're not coming back every time. Mallu, tell us about the Moon King and the Star King, so we'll come. Every time the same story, imitating, there was a banyan tree. Laughs and disappears. Grandfather laughs, this story is what builds a family, a society, a nation. This is what makes life strong, vast, and great. The hookah starts puffing. The curtain falls. Third scene. The same veranda. The two cots are still placed next to the windows, and the cots are still stacked against the wall. Yes, the chair has moved to the center. It appears that the younger daughter-in-law, Bela, was sitting on it, sunbathing. But when the curtain is raised, she is seen anxiously wandering around the veranda, a book in one hand, as if a thought had struck her while she was reading. Bela, to herself, what kind of people have I fallen into? What kind of people are these? I can't understand anything. Today it's one thing, tomorrow it's another. One tola, the next. I can't understand anything about them. Then she slowly turns around, thinking. When they're hot, they turn into fire, and when they're soft, they appear softer than wax. What they criticize today, they praise the same thing tomorrow. I'm fed up with these people. Goes back to her chair and opens the book. Her mother-in-law and younger sister-in-law come in from the gallery. You were right, daughter. All this junk looked like a junkyard, not a living room. I thought this stuff had been lying in this room for so long, nothing that bad, and everyone had been sitting on it for so long. I hope Grandpa wouldn't be offended. But it was good that you took it all away. I've told Paresh to go with him and buy the things he likes. I'll tell Rajwa all this and send her to Suresh's room. The scoundrel has gotten angry with me many times over these very chairs. Bela, please sit, mother. Choti Bhabhi, just sit, daughter. I just happened to see you sitting here. The grain is lying around, it needs to be threshed, the chilies are lying around, they need to be crushed, the butter has been stored for several days, it needs to be made into ghee, there are a dozen other tasks, and the day is ending. I thought you wouldn't mind what I said. In fact, daughter, Rajwa came to me and burst into tears. The maid is intelligent, trustworthy, and obedient. But how can she do something she's never done? Bela, getting up, please sit. Choti Bhabhi, putting her hand on her shoulders and making her sit, please sit, daughter. Don't bother me. I won't waste any more of your time. I just came to recommend her to you. She's an emotional woman, easily offended. What you should do is, as soon as the new furniture arrives, set it up in front of you and teach Rajwa how to dust and clean it. Then she won't make any mistakes. If not, tell me sometime. I'll explain it to her.
Bela, no, no, you. Younger Bhabhi, you are educated and intelligent, daughter, that's why I've told you this. If you don't want it, some other arrangement will be made. Don't worry about it at all. Prepares to leave. Bela, you just sit down. Younger Bhabhi, no, no, you study. I won't waste your time. Leaves. Bela, closing the book and taking a deep breath, as if to herself, I don't understand anything about these people. How did this mother change so suddenly? Just the day before yesterday, she was scolding me for this same Rajwa. We can't find out anything about them. She starts reading again. The elder daughter-in-law and the middle sister-in-law enter from the outside door. Middle sister-in-law, why, daughter, has Rajwa learned some work now? She laughs a little. She's old, so she's wise. Elder daughter-in-law, you were right about Indu. We don't really know how to work, but now. Bela, come sit here, move the cot. Middle sister-in-law, standing still, I've asked them to find an experienced maid, one who has worked in modern, big houses. Actually, daughter-in-law, grandfather is a big believer in old servants, they're kind and trustworthy. We've had them working for generations. This Rajwa's mother-in-law used to do the same work. Now Rajwa's daughter-in-law does the same work. Elder daughter-in-law, I'm telling you, sister, why don't you keep Rajwa's daughter-in-law with you? She's young and will learn the work quickly. Bela, distracted, no, there's no need for a new servant. Rajwa will learn the work, somewhat irritated, but why are you standing there? Middle sister-in-law, we won't harm you. Bela, even more irritated, it won't harm me. Elder daughter-in-law, we are younger than you, both in class and in intelligence. Bela, in a tearful voice, why do you drag me through thorns? Why do you treat me like a stranger? Stands up. Elder daughter-in-law, sit down, middle sister-in-law, you too. Bela, I'm leaving. Holding back tears, walks away quickly with a handkerchief over her eyes. Middle daughter-in-law, as if to herself, like a stranger, the middle daughter-in-law's laughter is heard from outside. The next moment, she comes out the door, swaying on Indu and Paro's shoulders. Indu, really? Middle daughter-in-law, holding back laughter, and why am I lying? I saw with my own eyes, laughs, that Malvi dug up the entire roof with a shovel, and Mr. Bansilal was left staring. Everyone bursts out laughing. Elder daughter-in-law, brother, tell me too, what did Malvi do, really? The middle daughter-in-law spreads the cot and sinks into it. Indu sits on one side of her and Paro on the other. The middle sister-in-law sits on a chair, and the eldest daughter-in-law stands. Middle sister-in-law, moving the chair a little closer, coming closer, did Malvi uproot the roof and throw it away in front of Bansilal? Middle daughter-in-law, I'm telling you. Mr. Bansilal was left staring, muttering. Everyone bursts out laughing. Elder daughter-in-law, hey, tell me which roof did you dig up? Middle daughter-in-law, what other work is there, not even the kitchen? It hasn't even been 2 hours since the royal labourers had finished putting the roof on, and Bansilal had just finished dealing with the craftsmen and labourers and had gone to the shop when Malvi came running from there, shouting. Who knows who told her that your brother-in-law had put a roof on his kitchen? Taking a shovel, she dug up the entire roof. Bansilal arrived when even the last brick had been uprooted. Then what all he did was stare and mutter. Everyone laughs except the middle sister-in-law. Middle sister-in-law, but Bansilal's son. Middle daughter-in-law, he's standing at the end of the street,
thumping his butt. She taps her thigh to show how he's thumping his butt. Indu, he's thumping his butt? Middle daughter-in-law, laughing, true. He's bragging and threatening to tear down the porch roof. He'll turn the house into ruins. He'll do it. And here Malvi is standing with her back taut, demanding that the son of a mother step inside the house. Everyone laughs. Indu, putting a finger to her lips, SHH. 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 Bhabhi is coming. The laughter stops suddenly. Silence falls. Bela, holding a closed book in one hand, slowly descends the stairs. Bela, why, sister-in-law, have you become silent? Laughs slightly. Are you laughing so hard about something? Middle sister-in-law, rising from the chair, was laughing casually. Come, sit here on the chair. Bela, no, you sit. I'll sit here on the cot. Middle daughter-in-law, getting up quickly, come, sit here. Indu and Paro both get up from the cot, come, sit here. Again, a darkness prevails, a kind of suffocating. Bela walks out. Indu, please sit, sister-in-law. Why are you leaving? Bela, turning around, in a tired and heavy voice, I was going that way. I just stopped on my way. I didn't want to interrupt your laughter. With a sad laugh. You laugh loudly. Quietly leaves through the courtyard door. Middle daughter-in-law, I told you not to come this way, didn't I? I've got a habit of laughing. Indu, now this was the only place to sit. Middle daughter-in-law, when we laugh heartily, and it interferes with the younger daughter-in-law's studies. I say, if grandfather finds out that our sitting here is disturbing the younger daughter-in-law's studies, he. Indu, but there was a place with curtains. Middle daughter-in-law, you forgot, grandfather specifically told us to be careful, she bursts into laughter. I'm saying, come to my room. Indu, I have to wash grandfather's clothes, so I'm leaving. She quickly walks out. Middle daughter-in-law, okay. You guys shouldn't sit here so much anymore, to the elder daughter-in-law. I was going to the storehouse, let's get the wheat sorted. The younger sister has already left. Then the day will set, and the maids will leave. Elder daughter-in-law, I'm trapped by the middle one's words. Come on. Both leave. Middle daughter-in-law, I'm telling you, Paro, come to my room. Let's go and sit there. Paro, walking, I have to go, sister-in-law. Lalla must be here, he'll scream if he doesn't find me. Middle daughter-in-law, to herself, this younger daughter-in-law has come like an eagle and scared everyone. Paru leaves. The elder sister-in-law is seen coming from outside. The middle daughter-in-law runs to her. Elder sister-in-law, did you hear about Malvi? She dug up the entire roof. She laughs. Elder sister-in-law, did Malvi dig up the roof? Middle daughter-in-law, taking her with her towards the room. Yes, the royal laborers had just finished building the roof when Malvi came in, beating me. Elder sister-in-law, but. Middle daughter-in-law, come to my room. I'll tell you everything there. It's hampering the younger daughter-in-law's studies here. Taking her with her towards her room. Paresh and Bela enter from outside, talking. Bela, with a moist voice, please send me to my parents' house. I feel like I'm among strangers. No one understands me, and I don't understand anyone. Paresh, what's the matter? Please say something. Bela, when I go in, everyone stands up. Elder sister-in-law, middle sister-in-law, and even mother. No one laughs in front of me,
no one wants to talk to me for long. Everyone is as afraid of me as a chick is of an eagle. Just a moment ago, everyone was laughing and laughing loudly. When I arrived, everyone was stunned, as if someone had whistled to silence the gathering. Paresh, but in this Bela, no one else lets me touch the work. If I start doing even the slightest thing, everyone comes running. Everyone respects me as if I'm the eldest in the house. Paresh, I don't understand what you want. You had a complaint that no one respects you. Now everyone respects you. You had a complaint that you have to be subservient to everyone, now everyone subservient to you. You had a complaint that you do everyone's work, now everyone does yours. Respect, hospitality, comfort, what else do you want? Quickly climbs the stairs. Bela sinks exhausted into the chair, I don't know what I want. Begins sobbing, I don't know what I want. But I know this much, I don't want all this respect, hospitality, happiness, and comfort. She hides her face in her arms and sobs. Indu enters through the outside door, some dirty clothes in her hand. Indu, Bhabhi ji. Bela remains silent. Indu, shaking Bela's shoulders, Bhabhi ji. Bhabhi ji. Bela raises her face. Indu, yes, Bhabhi ji, are you crying? Bela, wiping her eyes, no, I'm not crying, but Indu, for God's sake, don't call me ji. Indu, well, how is that possible? You're older than me, and you're much more educated than me. Bela, why didn't you call me ji, sir, before? Indu, I'm such a fool, Bhabhi ji. Grandfather said. Bela, suddenly startled, what did grandfather say? Indu, he explained to everyone that everyone in the house should respect you. Bela, but why did he say all this? I never complained to him about this. Indu, maybe younger brother told him that you don't feel comfortable here, you gardener. Bela, oh. That's it. Indu, grandfather can tolerate everything. But he can't tolerate separation from anyone, we are all branches of one great tree, he used to say, and before any branch breaks off, I will leave this house. And he explained to us all that we should respect you, work, and give you time to study and teach. Bela, but I don't want respect, and I don't want to be with all of you. I want to work together. Indu, how is that possible, Bhabhi ji? Bela, sighing deeply, you guys misunderstood me so much, and I misunderstood you so much. Indu, what are you saying? Bring the clothes. I'm going to wash grandpa's clothes, I'll throw yours in as well. Bela, silently thinking. Indu, Bhabhi ji. Bela, as if she's made up her mind, I'll go with you, I'll wash the clothes with you. Indu, grandpa won't be angry. Bela, I'll tell grandpa. Indu, Bhabhi ji. Bela, just call me Bhabhi, my dear Indu. Indu, with a loving hug, Bhabhi. Bela, let's go wash the clothes. The sun is coming out. Indu, but your clothes. They both leave. A few moments later, the sound of laundry being washed can be heard in the veranda. Grandfather enters from the gallery, smoking a hookah and holding Mallu's finger. Grandfather, yes, son, we'll go to the fair. I'll buy you whatever toy you ask for. Suddenly stops near the door. Grandfather, surprised, yes. Younger daughter-in-law. Indu, from outside, I told you so many times, but your sister-in-law didn't listen. Grandfather, younger daughter-in-law, come here, daughter. A shy Bela stands near the door. Grandfather, son, washing clothes isn't your job.
After studying. Indu, who has come with her sister-in-law. I told you so many times, but your sister-in-law didn't listen. Grandfather, who didn't like the disrespect in Indu's tone. Indu, I've told you so many times to be respectful. Bela, in a fit of emotion, with a choked voice, Grandfather, you don't like a branch breaking off from a tree, but would you like that branch to dry up and wither while still clinging to the tree? She sobs. The hookah's gurgling sound suddenly stops. The curtain suddenly falls. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.